friends, myself Meenu Kapoor. Welcome to my channel Code with MK. Today's topic is file handling, and I'll be covering in file handling introduction, data files, opening and closing files, reading and writing files. So first of all, what is file handling? File handling basically is a mechanism by which we can read data of disk files in a Python program or write back the data from Python program to the disk file. In the next slide, I'll be explaining this with a diagram. So far, whatever we are doing in Python, input is coming from standard input, that is keyboard, and output is going to monitor or standard output. And your data is temporary or transient. It is not stored anywhere. I'm talking about data. Programs are stored, no doubt. But if you're talking about data, suppose you have taken a list, right? And you have taken the marks of 100 students in the list. And after running the program, the data is washed out because it is not stored anywhere. List is temporary, right? So if you want to store your data permanently, then we need file handling for that. We need to create a file on your disk that will be written and read through your Python program. So this is file handling is all about, right? So file handling allows us to store data entered through Python program permanently in your disk file, and later on we can read back the data or edit our data, right? File, what is a file basically? File is a sequence of characters only. It is a document or data which is permanently stored on any permanent storage or secondary storage device, for example on your hard disk, which you can read, write or edit as per your requirement. File input output means transfer of data from secondary storage to main memory or vice versa, right? इसको मैं भी explain करते हैं next slide में. So look at the diagram. This is a user. In the mid, it's a program which is stored in RAM, obviously, because as you know very well, every processing is done in RAM. And third is your hard disk. So whenever user wants to write in the file through Python program, he or she will write into the hard disk, and that will be called output for file, right? And whenever you want to read your file, हार्ड डिस्क से आपका डेटा यानी फाइल से आपका डेटा उठकर आएगा आपके प्रोग्राम के पास, एंड दैट विल बी रेड बाय द यूजर. सो दिस इज कॉल्ड इनपुट, O and I, right? Data file, it contains data obviously pertaining to specific application that can be used later. I have already discussed. And data file in Python basically stored in two ways. One is text file and binary file. One by one we'll be discussing the different both the files, and I'll tell you the difference between text and binary file. Text file stores the information in ASCII or Unicode character, right? जैसे आप नोटपैड की फाइल्स बनाते हैं, वो सब टेक्स्ट फाइल्स हैं. इनफैक्ट पाइथन की फाइल इज ऑल्सो टेक्स्ट फाइल विच इज़ क्रिएटेड इन एडिटर, विच कैन बी डायरेक्टली रीड. आप उसे डायरेक्टली रीड कर सकते हैं, और जो भी आप चीज़ उसमें स्टोर करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर स्टोर होती है. फॉर एग्जाम्पल, हमने लिखा डेटा है हमारा कंप्यूटर, तो इट विल टेक 8 bytes, COMPUTER, right? It will take 8 bytes. If you are taking float value, right, and the data is 11237.9876, so it will take 10 bytes. It will not consider it as a float value, as in some application float take 4 bytes, say in computers, but here it will be treated as individual characters. Each digit will be treated as individual character in text file, and this number, as I mentioned, 11,237.9876, it will take 10 bytes into the memory if I am using text file, right? And in text file
every line is terminated by a special character EOL, end of line character, जिसे हम पाइथन में /n और /r और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ से कंसीडर कर सकते हैं. कॉम्बिनेशन हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब पाइथन इसको राइट करता है तो इट इज some translations take place. हमारा जो /n कैरेक्टर है, it is converted into /n plus /r combination, right? So next फाइल में डेटा आज जैसे हम देते हैं वो उस तरीके से ना स्टोर होके कैरेक्टर्स की फॉर्म में स्टोर होता है, और हर लाइन के बाद एक स्पेशल कैरेक्टर लगता है, दैट इज एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर. बाइनरी फाइल डेटा को उसी सेम फॉर्मेट में स्टोर करती है जैसा डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आपने दिया है. से इफ यू आर टेकिंग फ्लोट वैल्यू, डजंट मैटर आपका नंबर कितना बड़ा है, बट इफ इट इज फ्लोट तो इट विल टेक 4 बाइट्स इनटू द मेमोरी. इट विल नॉट टेक अकॉर्डिंग टू द डिजिट्स इन द नंबर, राइट. 22.76 भी उतना स्पेस लेगा और 23,500.76 भी उतना ही space देगा if I am working with binary file. And second difference is there is no delimiter for a new line and no character translations. यानी कि इंटरनली कोई ट्रांसलेशंस न्यू लाइन का वहाँ पे अकर नहीं होता और न्यू लाइन के लिए कोई डेलिमिटर सेपरेटर वहाँ पे नहीं होता है. सो बाइनरी फाइल में जैसे ट्रांसलेशंस भी नहीं होते हैं, नंबर्स भी कम जगह लेते हैं, एज आई टोल्ड यू, बिकॉज इट विल बी अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप्स. सो बाइनरी फाइल्स आर फास्टर इन कंपैरिजन टू टेक्स्ट फाइल एंड ईजियर फॉर प्रोग्राम टू रीड एंड राइट देन टेक्स्ट फाइल. हाँ, एक प्रॉब्लम एग्जैक्टली नहीं है, बट सम पीपल से कि वी कैनॉट रीड द डेटा directly in case of binary files, but according to me it is the benefit not the drawback, because इसका डेटा डायरेक्टली फाइल को नोटपैड या किसी भी एडिटर में खोल के नहीं देख सकते हैं, जो हम अपने प्रोजेक्ट में चाहते भी नहीं है कि कोई हमारा डेटा कोई डायरेक्टली खोल के देखे. इट कैन बी read through the program only and it can be written through the program only. So this is actually the benefit not the drawback, that data cannot be read directly, right? So you need to take the help of Python program to read and write the data in binary file. Steps in data file handling. Obviously, if I want to work in a file, first thing that I need to do is open the file, right? मुझे फाइल में रीड करना है या राइट करना है, but first thing I need to do is opening a file. Second step I will be doing performing read or write operation. जो भी मुझे करना है उस फाइल से रीड करना है या राइट करना है. And third thing, it is the responsibility of the programmer that after the use, he or she must close the file. So these are three main steps: opening, performing read or write, or whatever the processing you want to do in file. And third step is closing your file. Opening file. फाइल को ओपन करने का जो सिंटेक्स रहेगा वो रहेगा फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन and file का name in quotes. If it is a string or if it is a variable, then we can give without quotes. Or same syntax, but there are 2 arguments in open function: file name comma mode. Mode first part में optional मैंने लिखा है because by default it open the file in read mode. But if read और write क्या modes I'll be discussing in detail later on, but initially आप ये तो समझ लीजिए कि एक read करना है और एक write करना है. तो एक मोड हो जाता है read mode और एक मोड हो जाता है write mode. अगर मुझे फाइल में लिखना है तो I'll open the file in write mode, and if you want to read the data from the file I'll open it in read mode, right? So mode अगर मेरे को लिखना है if I'm doing something else except read, right? तो रीड करने के लिए मोड लिखना ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं. सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर ओपनिंग अ फाइल. नाउ आई विल टेक एग्जांपल. f equals to open story.txt in quotes. You can write the name of any file here, but it should be text file because I am working in text file initially. So story.txt, I have not mentioned any mode here because I want to open the file in read mode. What is f here? Story.txt is a file that is already loaded into the memory. If it is not existing, then definitely it will produce an error. f एक object है फाइल का, and after opening the file, Python will return the object to that file. इसको हम
फाइल हैंडल भी कह सकते हैं, फाइल हैंडल कह सकते हैं, फाइल वेरिएबल कह सकते हैं और ऑब्जेक्ट कह सकते हैं. story.txt at present must be in the same folder where your Python is installed, right? Otherwise we need to give the full path of the file that I'll be telling in the next slides, right? So f equals to open story.txt will open the file named story.txt which already exists on my disk in the same folder where Python exists, and it will return me the object which I can store in any name. Here I have used f. You can use m, you can use my file, you can use file1, file2, whatever. Now second example is with mode. F equals to open a.txt comma r. R is read here. R for read, W for write, A for append. We will be discussing in detail all the modes in some next slides. So here a.txt is a file and R is the read mode, which I told you it is optional. Now what if your file is not in the same folder? Then you have to specify the path as I mentioned earlier. So second example in this particular slide is with path. F equals to open D drive /stud /poem.txt comma R. R is read mode. Here my file, that is poem.txt, resides in D drive in the folder named stud. But instead of single slash you will be giving double slash here. Why? Because सिंगल स्लैश का पाइथन में एक स्पेशल मीनिंग होता है and it is used as escape character. As you know, /n is for new line. So say my folder name is Neha and if I will give D drive /Neha, तो it will consider it /n. नेहा से पहले मैंने स्लैश दिया, so it can take it /n, that is new line. So to escape this we will always use double slash in path instead of single slash. Example, f equals to open D drive /stud and p.txt is my file name here. If you don't want to use double slash, then one more option is there in this slide. Second example, f equals to open r before the path. ये मैंने white color में different r लिखा है. Last वाला r is for read mode and before the path, before the quotes, if I am using r, so it will convert it as raw data. So here it will not take single slash as escape character. So now I can give single slash in path. तो two options are there. डबल स्लैश यूज करेंगे या फिर आर यूज करेंगे बिफोर द पाथ. नाउ दीज आर फाइल एक्सेस मोड्स. एज आई टोल्ड यू देयर आर डिफरेंट मोड्स. आर इज रीड मोड. केवल आप फाइल को रीड कर सकते हैं. आप फाइल को ओपन करेंगे, पॉइंटर विल बी एट द बिगिनिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फाइल, दैट इज 0th बाइट. अगर बाइनरी फाइल है तो आर बी लगाएंगे. बाइनरी विल बी डिस्कसिंग लेटर. और अगर हम टेक्स्ट फाइल करें तो आर यूज़ करेंगे. W इज़ फॉर राइट ओनली. केवल हम राइट कर सकते हैं फाइल में, रीड नहीं कर सकते हैं. इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन इट विल बी क्रिएटेड, एंड इफ द फाइल एग्जिस्ट then very important point here is that already existing data will be truncated. File will be overwritten, means पुराना डेटा वॉश आउट हो जाएगा राइट मोड में. अगर मेरी poem.txt में पहले से कोई पोएम लिखी है तो वो वॉश आउट हो जाएगी और वॉट एवर आई एम राइटिंग द न्यू डेटा विल बी रिटन. A is again for writing, but we call it append mode because here new data will be added at the end of existing data. No overwriting, no truncate. यानी कि अगर मुझे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा में ही आगे ऐड करना तो आई विल ओपन इन अपेंड मोड वाइल राइटिंग, एंड इफ आई वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल देन आई विल ओपन इन W और राइट मोड. R प्लस इज रीड एंड राइट, रीड एंड राइट, एंड W प्लस इज राइट एंड रीड. अब दोनों ही रीड एंड राइट रीड. डिफरेंस क्या हुआ?
R प्लस में फर्स्ट रीड है तो फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए पहले. अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो इट विल प्रोड्यूस एन एरर, एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट ऑल्सो. W प्लस अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं भी करती है, बिकॉज इट्स राइट एंड रीड, पहले राइट कर दें फिर रीड कर दें, तो अगर फाइल नहीं भी एग्जिस्ट करती है तो इट विल बी क्रिएटेड, और अगर एग्जिस्ट करती है तो पुराना डेटा ट्रंकेट हो जाएगा एज राइट मोड. A प्लस अपेंड एंड रीड, राइट एंड रीड बट विद अपेंड मोड, मतलब पुराना डेटा इरेज नहीं होगा. Closing a file, as I told you, if you are working in file, then after completing your work, it's a responsibility of the programmer to close the file, and syntax is very simple. File handler or file object dot close. Reading from a file, there are 4 main functions that can be used to read from a file. File handle dot read blank. It reads the entire data from the current position to the end of file. File handle dot read n. Here you can specify number of bytes. जैसे मुझे है कि मुझे कल 10 ही कैरेक्टर्स रीड करने हैं या 20 ही कैरेक्टर या 20 कैरेक्टर्स रीड करने हैं, तो I'll give f dot read 20. File handle dot read line. Here I can read some single line. If I am not giving any line number, तो it will give me current line. Or if I am giving n, तो it will read n bytes from that line, right? Read lines, it read all the lines and returns in the form of list. With example, it will be very clear to all of you. First example is of simple read, n means blank read. Here my.txt is my sample file in which I have written hello students, let's learn file handling in Python. This is my sample text file that I have created in simple notepad editor. Program read demo. F equals to open e drive slash my.txt. Here you can notice my file my.txt is in e drive and have used double slash to open the file. T equals to f dot read. F dot read will read all the content from the file and store in T and print T. You can see the output here. Hello students, let's learn file handling in Python. As it is, your data will be displayed in Python program output. Second example I have taken is program read n. You can read n bytes. So instead of reading the whole content, here I have read 10 bytes, right? So it will read only hello stud, right? Only 10 characters from the file. Next demo is read line. I told you it will read current line. So when I'll open the file, my pointer will be at the beginning. So T equals to f dot read line will read the first line at a time. At this moment, print T, hello students. If I use this command again, T equals to f dot read line, then it will read the second line, third line, so on. Now read lines. Read lines will read all the lines and will return in the form of list. Here you can see f equals to open a file, L equals to f dot read lines. So here it will return a list named L. I have taken it into L, and I can use loop to read from list. You know very well, for I in L, print I. Notice this, I have used end equals to space because read lines read the line including the slash n character means new line. तो अगर मैं end equals to double quotes n equals to space नहीं दूंगी तो मेरे प्रोग्राम के आउटपुट में डबल लाइंस आ जाएंगी. एक वो फाइल से उठाएगा और एक प्रिंट कमांड ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में प्रिंट करता है. तो here it is compulsory to use end equals to space if you want exact output. नहीं तो डबल लाइन का स्पेस, एक एक्स्ट्रा लाइन का स्पेस आ जाएगा between the lines, right? Writing in a file, I'll just tell you about theory part here. There are two functions used to write in a file, write and write lines. Write में we give string and write lines में we give the list that will be written in the file. Example we'll be doing in next video. That's all for today. Today you can do the practice of read only and file can be created in Notepad as I told you. Thank you. That's all for today.